Sir, with your permission, I rise to lay papers mentioned against my name as serial number 2 of the revised list of business. These papers contain various amendments as well as notifications of the NHAI. साध्वी निरंजन ज्योति। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित पत्र सभापटल पर प्रस्तुत करती हूँ। श्री नित्यानंद राय। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यावली में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेज सभापटल पर रखता हूं। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यावली सूची की क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभापटल पर रखती हूँ। सुश्री प्रतिमा भौमिक। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सदन की पटल पर रखती हूँ। डॉक्टर सुभाष सरकार। महोदय, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यावली सूची की क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूँ। नमस्कार। रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट हेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, श्री सुरेश गोपी। Thank you, Honorable Chairman. Sir, I rise to lay on the table a copy in English and Hindi of the 36th report of the department-related Parliamentary Standing Committee on Communications and Information Technology 2021-22 on action taken by the government on the observations, recommendations of the committee contained in their 21st report, 17th Lok Sabha, on India's preparedness for 5G relating to the Ministry of Communications, Department of Telecommunications. Thank you, sir. Statement by Minister Sri Ajay Kumar. धन्यवाद माननीय आदरणीय सभापति जी। मैं महिलाओं और बच्चों के प्रति अत्याचारों और अपराधों के संबंध में विभाग संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 230वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों समितियों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ। Motion for election to the Jawaharlal Nehru Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry. Dr. Mansukh Bhai Mandavia to move a motion. Honorable Chairman, sir, I rise to move that in pursuance of the Section 5(1)(k) read with Section 6(4) of the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry, Act 200/2008, this House do proceed to elect in the manner as directed by the Chairman, one member from amongst the members of the House to be members of the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry, in the vacancy caused therein due to the retirement of Shri N. Gokul Krishnan from the membership of Rajya Sabha on 6th October 2021. Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Honorable members, I have to inform that the House will be bidding farewell to the retiring members tomorrow. Some of them are retiring this month and some of them are retiring little later. As the House is not likely to meet before that, so we have decided to have farewell for all the around 72 members or so. So accordingly, 0 hour and the question hour will be dispensed with tomorrow to enable the retiring members, leaders of parties and others to make farewell speeches if they wish. Honorable members, as per practice, our members are allowed to associate themselves with 0 hour submission and special mentions made in the House by sending their names on slips devised for the purpose. Many a time these slips are received very late, causing delay in the preparation of the finalization of verbatim proceedings of the day. Therefore, for timely compilation of verbatim proceedings of the House, members are requested that those association slips should reach the table of the House by 1 p.m. for matters raised till 12 noon. For special mentions taken up before the adjournment of the House for the day, such slips may be sent to the notice room, room number 26, Parliament House, within half an hour of the adjournment of the House. This has to be taken care. Then, honorable members. Be read
because it really is being reduced to a ritual. I have no People are just problem, saying huh? few words, they are not allowed to read the special I have no mention. problem, These are provided if important the house is topics. willing to sit. If the members are not willing to sit beyond 6 o'clock and then say, both things cannot go, I agree. At least special mention should be read so that message goes to the people. Right. Please. When it comes to us, then we say yes, sir. Otherwise, no, sir. Okay. No, I have good members, very good. We have good members, but unfortunately, some of them are retiring. Honorable members, I received notices 267 by Venugopal, Santanu Sen, Nazimul Haq, Mansoor on the same subjects which were earlier given notice and deserved. So I am not going to admit them. Dr. Keshav Rao, Dr. Keshav Rao, no, that's not the position. I tell you, you meet me. Keshav Rao for the caste census in the country. We can't adjourn the house to discuss the same, so I am deserving it. It can be raised through other forum also. Srimati Janna Das Vaidya, 0 hours, ma'am. Thank you, sir. My 0 hour is restrictions of Zoom cultivation, large scale irrigation and timber smuggling have made Tripura an environmentally poor state. Sir, Bratokumar Young, a farmer from Gachilapara, village of Basda block in the Islamic dominated Dholai district. Tripura has had to better his son in exchange for just 10 kg Please. of rice. 10 kg of rice, unable to feed his family. Riang first sold his cattle, and when the situation got rough, he sold his 4-year-old son to his neighbor.
a study in 4 states, Maharashtra, Delhi, Bihar and Telangana. And they have recorded that maximum 51% of the adolescent girls, they have the access to the healthcare service, and less 49% they don't have the access. Sir. Sir, let me cite some examples. The problems they suffer from: lack of education. Sir, National Commission for Protection of Child Right, NCPCR, says 40% do not attend schools. Out of the school, dropout school, amongst the dropout students in the world, it is the 10th largest. India is the 10th largest country in the world. Unfortunately, we are having a project called Beti Bachao, Beti Padhao, but unfortunately, 75% of the total fund allocated for this project is spent for advertisement purposes. Sir, menstrual hygiene, another very important issue. Reproductive and sexual health. Sir, mental and psychological health. Sir, India shoulders 36.6% of total suicidal case in the world. And out of 15 to 19 age group, the suicide cases even surpass the cases of maternal mortality, sir. Sir, these age group suffers from tremendous injuries at different point of times. Gender-based violence, alcohol and drug abuse. In these cases, 20% more, the rural adolescent women are affected more than the urban adolescent women. Excessive tobacco use, HIV, other infectious disease, early pregnancy. Sir, under the age group of 16, the early pregnancy rate is 22.6%. And below 13 years, the age rate is 2.6%. 57% of them are anemic, 42% are malnourished and underweight. They are suffering from tremendous mental issues, sir. Sir, investment in adolescent health will yield demographic and economic dividends for the country. Come to our Bengal, we run Kannashri project to promote education up to the postdoctorate level. We provide cycle to access the school by Sobut Sati project. We provide Shiksha education to the ST and ST population by Shikhashri project, and we provide Rupashri project to prevent early marriage. So my humble submission before my government, please take up this issue very seriously, because it is a very burning issue and it will help our nation in the future. Thank you very much. Santosh sir. Shri Vijay Paul Singh Tomar. Shri Vijay Paul. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं किसानों के जो फसलें हैं उन पर लगने वाली बीमारियां, कीट पतंगों के इन सब के नियंत्रण के लिए जो प्रभावित कीटनाशक दवाएं थीं, 2 वर्ष पूर्व करीब 37 दवाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया, जिस कारण, और ये बहुत लंबे समय तक कई दशकों से प्रचलित दवाई थी, किसानों को कोई आपत्ति भी नहीं थी, लेकिन इनके बंद होने से और विकल्प के रूप में कोई दवा उपलब्ध न होने से बीमारियों से बड़ी नुकसान हो रहा है। इस साल भी दक्षिण भारत के कई राज्यों में मिर्ची पे बीमारी कई हजार करोड़ का नुकसान उसमें हुआ है। मानवर इससे जो बाहर से आयात की जा रही है वो दवा ना तो कारगर है और कई गुना ज्यादा कीमत की किसानों को देनी पड़ती है, और इससे जो आयात है जो 19-20 में करीब 9,000 करोड़ रुपए का था वो बढ़कर 12,400 करोड़ का हो गया है। मानवर इसके पीछे कारण है कि जो भारतीय उत्पाद हैं इसके कीटनाशक दवाओं के वो सस्ते भी हैं, प्रभावी भी हैं, उनकी गुणवत्ता अच्छी होने के कारण विकसित देशों में भारी मात्रा में उनकी मांग बढ़ रही है। और यही कारण है कि 19-20 में जो आयात 23,700 करोड़ का था वो 20-21 में 26,500 करोड़ का हो गया। इससे भारतीय कंपनी, अंतरराष्ट्रीय बाजार की ताकतें भारतीय कंपनियों के कृषि रसायनों की विश्व बाजार में बढ़ती हिस्सेदारी से दुखी हैं और पिछले वर्षों से तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं। यहां तक कि कुछ एनजीओज को विदेशों से फंडिंग करके वो हमारे जो जेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, भारत के जो जेनेरिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके माध्यम से ये आग्रह करना चाहूंगा कि जो प्रतिबंधित हैं, यदि विकल्प मौजूद नहीं है तो उनको प्रतिबंध से हटाया जाए ताकि किसान उसका उपयोग कर सकें, तो किसानों को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां लूट लुटाए। धन्यवाद। थैंक यू विजय पाल जी। श्री नीरज ढंगी। Thank you so much, Honorable Chairman, sir. Sir, in our country, sir, all the upcoming and newly entered sports person of shooting sports are unable to import the air weapons of .177 inch or 4.5 mm
caliber bore those who are willing to play at the district and the national levels because of the SAT norms as given by the Ministry of Commerce and Industries and the DGFT, the Director General of the Foreign Trade. As on today, the law says the air weapons which are allowed to be imported duty-free or GST-free, those are allowed only by the renowned shooters who qualify a certain score at the national level only. And that is defined under the 17.6, which is decided by the National Rifle Shooting Association of India's handbook, as it is allowed by the Ministry of Commerce and the DGFT notifications in Chapter 93 of ITCHS. The import of the air weapons which do not require to be registered for the arms license should be allowed for all the citizens who are seriously adopting this sports, shooting sports as sports persons. Through you, sir, I request the Honorable Minister of Commerce and Industries and DGFT to amend in these rules so that it should be benefited to every citizen of India, so that these air rifles or air weapons can be imported by them for the sports purposes only. As without their own personal air rifles and air weapons, these shooters cannot give good performance, and as well as they have to borrow these weapons from international and national level shooters. And because of that, their performance is they are not giving good performance, these new entrants. And also the existing national shooters and international shooters, they are also not performing well at the national level. Sir, I also request through you, sir, that please exempt the spare parts also of these said air weapons from duty as well as from GST, who need to repair their weapons and need to replace the damaged parts. Thank you, sir. Thank you. Good. Associate Slips and Sri Prasanna Acharya. Thank you, sir. Sir, my point is about some web channels who are showing very obscene scenes and language, using very objectionable languages, which has very detrimental effect on the society at large, sir. Sir, as you know, the entertainment industry was hit hard during the Corona time, and many theaters were shut down and film shoots came to almost a standstill position. And with no alternative source of entertainment, the over-the-top, what we call the OTT platforms, clocked in an unprecedented BRC. The BRC of the web channels went off like anything because other sources of entertainment were restricted during the COVID situation, sir. Sir, and taking advantage of that, what some of the web channels are doing, they are showing very obscene pictures in the web channels, sir, and sometimes using very, very objectionable languages, and that is having a very, very bad impact, particularly on the younger generations, sir. And not only that, sometimes they are showing such pictures which is hampering upon the communal harmony in the society, and that is creating hatred among different sections of the society. Sir, as you know, India is a multi-language and multi-religious society, and we need all the time harmony between different languages, different communities, and different religions, sir. For such type of show in the web channels, that is very seriously affecting, sir. And sir, had there been any censorship provision on these web channels, this could not have been happened. There is a film censor board, and any objectionable things that is seen in the pictures, that is being censored, and so that is working, sir. But for these web channels, there is no such provision, sir. And sir, therefore, most of the kids, the younger generation, they are now have access to cell phones and are exposed to such ugly scenes. So therefore, sir, in the name of freedom of creativity and in the name of expression of views, we cannot encourage debauchery and exploitation of women and disrespecting religious sentiments, sir. Sir, another thing I would like to show, sir, just last Monday, the Honorable High Court of Delhi has passed serious stricture on this Twitter, sir. The micro-blogging giant, the Twitter, they sometimes allow objectionable comments against religious communities, thereby creating atmosphere of religious intolerance. And sir, as I said, the Honorable High Court of Delhi has taken a serious objection to this and passed stricture, sir, on the Twitter, sir. That's sir, my submission is law should be made to impose censorship
on web channels who are taking undue advantage of not being censored and spreading hatred amongst religion and community. Okay. Thank you. Time over. Thank you, Prasanna ji. Sri Ayodhya Ramireddy. Namaskar, sir. Thank you for giving me this opportunity to raise a very important point. That is the strengthening of our security systems and platforms. Sir, India is a great country with more than 130 crore population. We are moving slowly into a digital world. Post-COVID, it is more imperative. We have accelerated our movement into the digital world. But the current situation around Russia-Ukraine conflict has exposed us to the vulnerabilities of human lives, along with other aspects relating to the national security, infrastructure, communication linkages, and displacement of a large number of populations to neighboring countries. Sir, at the time of conflict situations, countries are also faced with economic and communication blockades, affecting transfer of vital information and data, which are a part of any modern nation's lifeline, including banking operations, payment systems, and many other technological interfaces that people are used to on their daily livings. A blockade in internet or platforms which operate on the basis of internet connectivity will also be affected, and the entire country can be in a crisis situation within no time. In this respect, we as a nation should be well prepared to deal with such a scenario without affecting our country's security, not only in terms of defense, but in terms of economic and communication related security, including financial transactions and banking security. Sir, it is important that we should have a proper strategy and planning to meet such challenges based on happenings in such an eventuality. We should strengthen our own systems and protocols and also do everything possible for us to be ready with our own systems and to reduce dependence on others so that we are insulated a maximum from external intervention and manipulation by other countries in times of crisis. Such preparedness will help us to develop our own systems and procedures, will help the nation in long run. Instead of we depending on others, a situation will arise. Others may be wanting to use our technology and infrastructure. Thank you, sir. Thank you. Sri M. Shanmugam. Thank you, Chairman, sir. Regarding the Indian Labour Conference, the Indian Labour Conference is the mini parliament of the labour. It was the first Indian Labour Conference was convened in 1940, chaired by the A. Ramsay Moliar, the eminent economist. Subsequently, Baba Saheb Ambedkar has also headed. Within the 1940 and 48, there are 6 or 7 conferences has been held. All the labor laws are consolidated and bring in a central law for the laborers, and it has been still it is prevailing for the helpful of the laborers. But once in a year, this labor conference has to conduct. Sometimes twice in a year, it may be. But in 2015, the 45th Labour Conference was convened by this government. The Honorable Prime Minister Narendra Modi has also joined with that and has given the lecture. The Labour Conference is the best tripartite mechanism. Employer and employee and the government all participated and discussed about all the labour matters. After 2015, this Labour Conference suspended. So far,
no conference has been held. So all the 12 trade unions, recognized trade unions, we join together. We are asking them to convene the ILC, Indian Labour Conference, to discuss about all the labor matters. Yesterday, day before yesterday, 2 days, more than 30 crores of workmen have joined to the strike, and you know very well about it also. So our demand is it has to be discussed for controls the price rise. Everything for the common people. Right. So I urge the government to convene the Indian Labour Conference as early as possible and discuss all those the labor matters. Thank you very much, sir. Thank you. Associate. Send slips. Dr. Narendra Jadhav. Thank you, Chairman, sir. Sir, as per the guidelines of Department of Personnel and Training, DOPT, meritorious sport persons, including Olympians, are eligible for appointment under sports quota with a provision up to 5% reservation in Group C and Group D post in central government departments. Regrettably, however, sir, many instances have come to light wherein these global champions who brought laurels to India, they have been compelled to become roadside vendors or pick up menial jobs due to dire economic situation. Sir, time and again, it has been seen that many of these sports persons, after having brought laurels to our country and making India proud in the international level, fade into oblivion. Sir, one such example is Khashaba Dadasaheb Jadhav. His only namesake, not my relative. I must clarify that. He was the first athlete to win an individual medal in the Olympics. Sir, it was only in 2011 that he was awarded posthumously the Arjuna Award, and even 70 years after Jadhav's feat, the work of wrestling stadium, which was supposed to be constructed in his honor, that is still remain incomplete. It is most disheartening, sir, to see that India's first individual medal winner in Olympic faces such an apathy even after his death. Sir, as the people of India are celebrating Azadi Ka Amrut Mahotsav, I urge the government through you, sir, to kindly conduct a survey as to how many Indian sports persons who once brought glory to India by representing India in various national and international events are now living in penury, and extend to them recognition as well as benefit of social and employment security wherever possible. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Narendra Jadhav. Shri G.K. Vasan, Tamil. மரியாதைக்குரிய அவைத் தலைவர் அவர்களே, தமிழகத்தில் கும்பகோணம், திருபுவனம், தஞ்சை, அரியலூர், காஞ்சிபுரம், ஆரணி, கோவை, சேவல்பட்டுப்பாளையம் போன்ற பல மாவட்டங்களில் பட்டு சேலைகள் மற்றும் வேஷ்டி சட்டை உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இந்தியாவில் பல மாநிலங்களில் கைத்தறி நெசவின் மூலம் பட்டு தொழில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. தமிழகத்தை பொறுத்தவரையிலே பட்டு தொழில் சுமார் 2 லட்சம் நெசவு விற்பனை என நெசவாளர்கள் 10 லட்சத்திற்கு மேற்பட்டோர் இருக்கின்றனர். தமிழகத்தில் பட்டு தொழிலுக்கு தேவையான கோரப்பட்டு தமிழகத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படுவதில் கர்நாடகா 50%, மேற்கு வங்கம் மற்றும் வெளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது. கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்பு 1 கிலோ பட்டு ரூபாய்
3500க்கு விற்பனையானது. தற்சமயம் 1 கிலோ பட்டு ரூபாய் 7500 ரூபாய் 8000க்கு விற்கப்படுகிறது. கிட்டத்தட்ட 100% மேல் விலை உயர்ந்திருக்கிறது. இதனால் சேலை உற்பத்தியாளர்களுக்கு உரிய விலை கிடைக்கவில்லை. உற்பத்தியாளர்கள், தயாரிப்பாளர்கள் உற்பத்தியை நிறுத்தி வைக்கக்கூடிய சூழல். நெசவாளர்களுக்கு வேலை கிடைக்கவில்லை. எனவே மத்திய மாநில அரசுகள் பட்டு கைத்தறி தொழிலுக்கு தேவையான பட்டினை உடனடியாக விலை குறைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். மேலும் வெளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி தட்டுப்பாடின்றி கிடைக்கை செய்து விலை குறைப்பு செய்திட கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. Nandri. Thank you. He wanted the government to help the weavers, and also highlighted that the raw silk cost has gone up considerably and is finding difficult for these weavers. I understand it is because I am a neighbor. Say, D.K. Vasan. Many of the lady members could not understand it. Otherwise, all of them would have associated, because silk sarees, pattu saree. Sri Sanjay Singh. Right. धन्यवाद सर, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। मान्यवर, पंजाब, शहीद आजम भगत सिंह का पंजाब, जलियांवाला बाग कांड में अपनी प्राणों की आहुति देने वालों का पंजाब, लाला लाजपत राय जी का पंजाब, और दुर्भाग्य देखिए मान्यवर कि उस पंजाब की अपनी आज एक राजधानी नहीं है इतने वर्षों के बाद। 1966 में मान्यवर पुनर्गठन एक्ट के तहत चंडीगढ़ में यह नियम बनाया गया मान्यवर कि 60% पंजाब के कर्मचारी होंगे, 40% हरियाणा के कर्मचारी होंगे, और जो 60% पंजाब के कर्मचारी होंगे मान्यवर, उसमें पंजाब के सर्विस के नियम उनके ऊपर लागू होंगे। अभी केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया मान्यवर, जिसमें ये कह रहे हैं कि चंडीगढ़ के अंदर केंद्र सरकार की सेवा नियमावली लागू होगी, केंद्र सरकार के सर्विस रूल्स वहां पे लागू होंगे। मैं समझता हूं ये पंजाब के अधिकारों का हनन है मान्यवर, वहां के सरकार की अधिकारों का हनन है मान्यवर, और इसलिए हनन है क्योंकि जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय वहां पर रखे गए हैं बहुत सारे पंजाब सरकार के भी हैं मान्यवर। अभी हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने फैसला लिया कि जो ठेके के कर्मचारी हैं उनको हम परमानेंट करेंगे। अब जो चंडीगढ़ में ठेका कर्मचारी हैं उनके भविष्य का क्या होगा मान्यवर? उनको जब चाहेंगे आप निकाल के बाहर कर देंगे। तो मुझे यह लगता है कि इस प्रकार से जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की परिकल्पना रही है, संविधान की हमारी भावना यह है कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, भारत एक संघीय ढांचा है, राज्यों से गठित एक भारत की हम कल्पना करते हैं जिसमें राज्यों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। तो पंजाब का जो अधिकार चंडीगढ़ में है, पंजाब के कर्मचारियों का जो अधिकार चंडीगढ़ में है, वो हमारी केंद्र सरकार क्यों छीनना चाहती है, क्यों लेना चाहती है? इसलिए आपके माध्यम से मैं इस सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसा किसी भी तरीके का प्रयास आप ना करें। आप चुनाव में लड़े जीते हारे वो एक अलग विषय है, लेकिन उसके कारण से एक चुनी हुई राज्य सरकार के अधिकारों के, वहां के कर्मचारियों के अधिकारों को छीनना मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस प्रकार का कोई भी नियम, कोई भी कानून केंद्र सरकार को चंडीगढ़ में नहीं लागू करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अरनाथ सिंह यादव, सॉरी, श्री संजय राउत। सर, संजय राउत, मैं आपके माध्यम से हमारे देश के, हमारे समाज के अत्यंत उपेक्षित वर्ग की बात, उनकी वेदना आपके सामने रखना चाहता हूं। और उपेक्षित वर्ग है शिक्षक। 2 दिन पहले मुझे कोयला खदान शिक्षक संगठन के लोग मिले और उन शिक्षकों की यातना अन्याय देखकर मैं हैरान रह गया।
सर कोल इंडिया जो है उनके तहत बीसीसीएल, ईसीएल, सीसीएल, एमसीएल इत्यादि कॉरपोरेशंस काम करते हैं और उनके माध्यम से कोलेरी स्कूल चलाते हैं। लेकिन ये सभी स्कूलों के जो शिक्षक है वो अभी आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग क्या है? बहुत छोटी मांग है सर। उनको शिक्षकों को एटलीस्ट मिनिमम वेजेस में वो जो नहीं मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बराबर भी उनको वेतन नहीं मिल रहा है। एक अमानुष शोषण है शिक्षकों का। हमारे देश में एजुकेशन फॉर ऑल सर्व शिक्षा अभियान के तहत लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे। कोल इंडिया को भी इससे भारी फंड मिल रहा है, लेकिन ये जो शिक्षक है कोल कर्मियों के बच्चों को सिखाते हैं, उनको फ्री एजुकेशन देते हैं, वो अभी भी उपेक्षित है। करीब 40-45 साल से ये कोलेरी स्कूल जो है उनके जरिए गरीब परिवार बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन उन बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक आज भी उपेक्षित है। देश भर में कोल इंडिया के करीब 2000 शिक्षक हैं और जिनको सिर्फ 5 या 4 हजार रुपए की मामूली सैलरी मिलते हैं, वो भी 6-6, 7-7 महीने तक उनको इंतजार करना पड़ता है और आफ्टर रिटायरमेंट उनको एक पैसा भी उनको लाभ में नहीं मिलता है। अब ये शिक्षक भूखे रहेंगे, उनके परिवार भूखे रहेंगे, तो क्या लोगों को, बच्चों को शिक्षा देंगे? सर कोल इंडिया में आज भी पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। एक तरफ कोयला खदान शिक्षकों को मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ कोल इंडिया लिमिटेड में कमर्शियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट को करोड़ों रुपया बांटा जा रहा है। सर पिछले 5 साल में कोल इंडिया और उसके सब्सिडीज ने लगभग 2000 करोड़ रुपए CSR के तहत खर्चा किया है, लेकिन अपने ही शिक्षकों को वेतन देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। ये बहुत दुखद बात है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि 16वीं लोकसभा की स्थायी समिति कोल की 14वीं रिपोर्ट के आदेश के अनुसार ऐसे शिक्षकों को राज्य सरकार के शिक्षक के बराबर सैलरी दी जाए और ये जो शिक्षक है उनका जीवन मान सुधारे। धन्यवाद। कोल मिनिस्ट्री प्रहलाद जोशी जी ना, MOS है, उसको थोड़ा नोट करके, मुरली जी नोट करके मंत्री जी का ध्यान में लाना। तो श्री हरनाथ सिंह यादव। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में एक मस्तिष्क को हिला देने वाले एक मुकदमे की ओर सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय प्रयागराज जनपद का एक गांव है नैनी चक्का। वहां का एक मुकदमा जमीन विवाद को लेकर के 1969 में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर हुआ। उस विवाद का अंतिम निर्णय अभी 1 माह पूर्व 2022 में आया है। माननीय 7 विस्वा जमीन के विवाद निपटारे में 52 साल लगे। 56 जजों ने सुनवाई किया और निर्णय आने से पहले 7 याचिकाओं में से 6 स्वर्गवासी हो गए। हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया की वस्तु स्थिति समझने के लिए यह एक उदाहरण पर्याप्त है। महोदय, कहा जाता है कि न्याय में देरी अन्याय है, अर्थात देर से मिले न्याय की कोई सार्थकता नहीं होती है। हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था का अपना अलग महत्व है और अनेक खामियों के बावजूद न्यायपालिका के प्रति अभी भी जनता का अगाध विश्वास बना हुआ है। कानून के राज के प्रति जनता का विश्वास बना रहे, इसके ऊपर गहन चिंतन की आवश्यकता है। मानव, इस समय देश भर में तहसील से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक लंबित मुकदमों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। इसका अर्थ यह है कि देश की 20 करोड़ आबादी न्यायिक प्रक्रिया में फंसी हुई है। विधायिका और कार्यपालिका में सार्वजनिक पदों पर कार्य करने वाले सेवकों की जवाबदेही निर्धारित है मान्यवर, परंतु न्यायिक क्षेत्र में ऐसी कोई जवाबदेही किसी व्यक्ति की निर्धारित नहीं है। आए दिन इस प्रकार के प्रकरण जानकारी में आते हैं कि आरोपी को 25-30 वर्ष दोषी ठहराने में लग गए और निर्णय आने तक आरोपी की मृत्यु हो गई।